cash flow from operating activities, and this is the fourth part of our discussion. In this module, we'll try to apply the knowledge related to the cash flow from operating activities with the help of an example. But before we start this example, let's have a recap. We talked about that in operating activities, in the indirect method of making a cash flow statement, we start with the net profit figure. And then in the net profit figure, we make adjustments. We adjust non-cash expenses, we adjust the changes in the current assets, and we adjust the changes in the current liabilities, excluding short-term financing. Now let's have a look at this example. Some of the figures are given here. And with these figures, we'll try to make a portion of this cash flow statement, that is cash flow from operating activities. If the net income of the business, let's suppose, is 100,000 rupees and depreciation is 20,000 rupees, which is a non-cash expense, a representative expense of non-cash items. Then if there is an increase in accounts receivable, which is a current asset, so we'll see that how do we treat the increase in a current asset. Decrease in inventory. Inventory is also a current asset, and if there is a decrease in a current asset, we'll see in this example that how do we treat that. Likewise, we have got two liabilities. The first one is accounts payable, and there is an increase in accounts payable of 7,000 rupees, and there is a decrease in accrued expenses of 5,000 rupees. So this example very briefly explains that how do we treat the non-cash expenses and increase or decrease of current assets and current liabilities. Let's have a look at this cash flow statement from operating activities. We begin with the net income, which is 100,000. Now, depreciation, which is a non-cash expense, is to be added in this. So this amount of 20,000 will be added in 100,000 in order to reach to the figure of cash flow from the profit. फिर हमने ये बात की थी कि अगर अकाउंट्स रिसीवेबल बढ़ गए हैं तो इसका मतलब है कि जो रेवेन्यू या सेल्स में हमने सपोज किया था कि कैश हमें मिल गया है, इतनी अमाउंट से वो कैश हमें नहीं मिला. तो जब ये कैश हमें नहीं मिला तो इसका मतलब है कि ये हमारी कैश इनफ्लो नहीं हुई, इसलिए इसे हम प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं ताकि वो अमाउंट एडजस्ट हो जाए जो कि हमने कैश इनफ्लो के तौर पर ले रखी है. When there is a decrease in inventory, तो इस पर हम ये प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं कि अगर कोई एसेट कम हो गया है तो इसका मतलब है कि उस एसेट के बिकने से हमारे पास कैश इनफ्लो हुई है. बिकॉज द एसेट हैज़ डिक्रीज्ड, सो दैट हैज़ रिजल्टेड इनटू कैश इनफ्लो, तो हम इसको प्रॉफिट में ऐड कर देते हैं. नाउ लेट्स मूव टू द लायबिलिटीज. The first one is accounts payable. Accounts payables arise because of credit purchases. जब हमने goods खरीदे थे और उन goods को हमने बेच दिया, लेकिन ये goods के अगेंस्ट जो पैसा हमने पे करना था वो हमने पे नहीं किया. यानी ये जो 7,000 इंक्रीज इन लायबिलिटी है, ये बता रहा है कि जो अकाउंट्स पेबल हमने जनरेट किए थे या जनरेट हुए थे बिकॉज ऑफ क्रेडिट परचेजेस, उसमें से ये अमाउंट साल में हमने कैश की शक्ल में पे नहीं की. दिस मीन्स कि हमने क्रेडिट परचेजेस की सारी अमाउंट को, क्योंकि अपनी कैश फ्लो बनाते वक्त, अपनी प्रॉफिट लॉस बनाते वक्त आउटफ्लो के तौर पे कंसिडर किया है, लेकिन क्योंकि ये बैलेंस बढ़ गया है तो ये बताता है कि हमने ये अमाउंट कैश की शक्ल में पे नहीं किया. और क्योंकि नहीं किया और हमने उसको एज एन आउटफ्लो ले रखा है, तो इसको एडजस्ट करने के लिए हम इसे भी अपने नेट प्रॉफिट में
ऐड कर देते हैं। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी मीन्स कि आपने लायबिलिटी का कुछ हिस्सा पे किया है, यानी वो लायबिलिटी जो साल के शुरू पे थी अब उससे कम हो गई। इसका मतलब पिछले साल की लायबिलिटी में से भी कुछ हमने पे कर दिया। सो व्हेन वी हैव पेड इट दैट मस्ट हैव रिजल्टेड इनटू कैश आउटफ्लो, और इसलिए हम इसको माइनस करते हैं। देन वी विल sum up all these inflows and outflows adjustments, and we see that it comes out to be a net adjustment of 10,000 rupees। यानी ये वो एडजस्टमेंट्स हैं जो कि हम प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट की फिगर के अंदर करते हैं। ये भी हो सकता है कि ये फिगर हमारे पास एडजस्टमेंट की नेगेटिव आ जाए, यानी हमें नेट अमाउंट प्रॉफिट में से माइनस करनी हो, और यूं भी हो सकता है कि इन एडजस्टमेंट्स का सम हमारे प्रॉफिट के को मजीद बढ़ा के हमारी इनफ्लो की फिगर तक ले आए। सो हेयर द नेट रिजल्ट इज 10,000 इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कैश इनफ्लो, एंड एज अ रिजल्ट वी कैन सी दैट हमारा प्रॉफिट 100,000 था, लेकिन हमारी नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज उससे 10,000 ज़्यादा होके 110,000 हो गई है।